Attention NEET 2026 aspirants as well as CUET 2026 aspirants. ये खबर आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली एनटीए ने एक एडवाइजरी लॉन्च की है जिसमें उन्होंने CUET 2026 एस्पिरेंट्स को लाइव फोटोग्राफी या फोटो मिसमैच के कंसर्न को उठाते हुए एक करेक्शन करने का मौका दिया है। हुआ क्या है उसको हम डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करते हैं और नीट 2026 स्टूडेंट्स के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है वो भी हम देख लेते हैं। So here on the screen we have the latest NTA advisory that was issued on 7th of April 2026 for the CUET 2026 aspirants. In this advisory it has been clearly said that the registration for the CUET 2026 had started from 3rd January 2026 to 4th February and the second interval started from 23 to 26 February. Exam आपका 11 से 31 मई 2026 के विंडो के बीच होगा। अब एडवाइजरी में और क्या डिस्क्राइब किया गया है उसको देख लेते हैं। इफ यू केयरफुली रीड द एडवाइजरी, एनटीए हैज एक्सप्रेस्ड देयर कंसर्न रिगार्डिंग द लाइव फोटोग्राफ दैट वाज कैप्चर्ड बाय द कैंडिडेट्स एंड its mismatch with the photographs as per the records available with the UIDAI. That is, आपने जो आधार अपडेट किया था उसमें जो फोटो है and the live photograph which was taken during the registration or the enrollment of CUET 2026 did not match. And in that case, NTA has given a strict warning regarding the photo mismatch and they have also expressed a solution for it. Solution क्या है उसको डिस्कस कर लेते हैं। If you clearly read this advisory, NTA has provided affected candidates with an opportunity to verify their identity by uploading a signed and attested certificate. NTA has provided an opportunity for the students who have been affected by this concern that they can upload a signed and attested certificate. एक signed या attested certificate की ज़रूरत होगी जिसमें इसको करेक्ट किया जा सकता है और ये attested certificate आपको किससे साइन कराना है वो भी यहाँ पे mentioned है। Attested certificate must be signed by a class 1 gazetted officer. क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर में आपका तहसीलदार आ जाएंगे, रेवेन्यू ऑफिसर आ जाएंगे, एसडीएम आ जाएंगे, डीएम आ जाएंगे और अ क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर of the Indian Embassy for the NRI candidates. Now if you are in touch with the school principal or you can easily have an access with the school principal, you can also get this form attested by them. Also, if you are in touch with any government college or government university principal or dean, then you can also get it attested by them because they are also counted in the class 1 gazetted officer. Okay. Now, what you have to do is you have to click on the link and you have to express your issue, as well as the NTA has also given the PDF format for the certificate. As you can clearly see on the screen, there is a Annexure 1 in which NTA has provided the PDF format of the test copy which you have to get attested. Now, what you have to do in this, you have to place the photograph which was taken during the live photography during the registration of the CUET examination in this. अब ये कैसे करोगे आप? आपको जो confirmation page मिला था CUET 2026 के registration के टाइम पे, उसमें जो live photograph है उसके आप passport copies निकलवा के यहाँ पे paste कर सकते हैं। On this page you must take the latest photograph, whatever passport size photographs that you recently got clicked and uploaded it during the registration of CUET 2026, उसको आपको यहाँ लगाना है। तो आपकी लाइव फोटोग्राफ यहाँ पे लगेगी और आपने जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लिया था उसको यहाँ पे लगाना है and you have to get it attested over here by the principal, headmaster or any class 1 gazetted officer. Here you have to write your name, here you have to enter your application number, next your name again, your father's name in general, your residential address. नेक्स्ट अगर हम आगे देखें और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, आप जिनसे भी अटेस्ट करवा रहे हो उनका नाम यहाँ पे आएगा, डेजिग्नेशन आएगा, ठीक है, स्कूल नेम एंड एड्रेस, देन द कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ द कंसर्न पर्सन, सिग्नेचर एंड देन द स्टैम्प seal of the principal or the headmaster or the class 1 gazetted officer. It can be anything as already described. And then you have to share this copy after filling the entire form with NTA and you have to keep an extra copy for the examination and counseling purpose as well. Now, ये खबर मैं नीट एस्पिरेंट्स के लिए क्यों बता रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके रजिस्ट्रेशन के टाइम पे भी एक लाइव फोटोग्राफी का कॉन्सेप्ट इस बार इंट्रोड्यूस हुआ था। There are chances that there can be a photo mismatch in your live photograph as well as the photograph that is with reference to the UIDAI, that is the Aadhaar card which you have uploaded during the registration process.
अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली जाना है इंफॉर्मेशन बुलेटिन पे फॉर द एनटीए नीट साइट। वहां पे अगर आप पेज नंबर 118 पे जाएंगे तो वहां पे एक सिमिलर एनेक्जर 1 दिया हुआ है, जहां पे एक सिमिलर अटेस्टमेंट कॉपी दी हुई है। आपको इसको फिल करना है। इन केस अगर एनटीए फ्यूचर में या अपकमिंग डेज में नीट एस्पिरेंट्स के लिए भी ये एडवाइजरी रिलीज करता है तो यू शुड बी वेल अवेयर कि आपको ये काम कैसे करना है। एंड दैट इज व्हाई दिस न्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द नीट 2026 एस्पिरेंट्स. I hope you will keep this in mind. Do not forget, you will find a similar copy on page number 118 of the information bulletin, where you can get it attested later with a live photograph as well as the recent photograph that you have recently uploaded. I hope this information has been useful for you. For such more content, stay tuned and stay connected with Medical 360. Do not forget to subscribe to Medical 360. Thank you.